afternoon. You must have seen all the excitement building around this, as somebody pointed out, around the name, which resonates very, very well with our community and what we are trying to achieve. This would be one of the biggest resources now which we have been able to put together, which is resonating with so many of you. So many applications had come in for the room registration. I don't know if everybody would be able to join in, but it has been an exciting mix of different businesses and different places where people would have joined us from. This is essentially trying to build a community which will give us firstly a cohort, a pilot cohort along with Amazon Saheli, wherein we would try and help each and every one of you in the cohort to make it a success as an Amazon seller. So whatever hand-holding is required, whatever sessions, whatever knowledge sharing is required, the Amazon team is here and we are here for the entire cohort. And what could you expect out of the cohort is what this whole session is about. I'll hand over to Madhura to take it on from here, and we can learn along this hour. Thank you so much, Preeti. Very, very excited to welcome all of you to yet another session of EntrepreNaari at Aspire for Her. I am Madhura DasGupta Sinha, and I'm the founder and CEO of Aspire for Her. I started Aspire for Her because I was very disappointed with the gender data that I saw emanating from India. In terms of economic participation, India, for women, India is pretty much at the bottom of a list of 146 countries. In terms of women in the workforce, there's been a declining trajectory for the past 15 plus years. This disturbed me. And I thought someone needed to do something to solve this problem. And I thought that someone could be me. That is the reason why Aspire for Her was born on Women's Day 2020. But do we want women only to be job seekers? No. We also want them to be job creators. And it is with this thought that Navya Nanda and I got together and we decided to build a new community called EntrepreNaari. EntrepreNaari is meant for every woman who is an entrepreneur and also aspires to be an entrepreneur. EntrepreNaari is meant for every woman in our country who has a dream of building something of her own. EntrepreNaari was born almost exactly 2 years ago on June 21st. And today we are happy to have more than 20,000 members at EntrepreNaari. They come to us to build a community which will support each other and which will help each other grow their own businesses, translate their dreams into reality. And today it's our pride and privilege to offer one of the best resources that we could think of for EntrepreNaari. This is a partnership with Amazon Saheli. Nobody needs an introduction to Amazon, and anybody who is dreaming of sending their products across the country, across the corners of the vast geography, you cannot think without Amazon. So we are delighted to welcome Swarnim Sinha and his amazing team from Amazon on this session today as we go about this wonderful launch over the next few minutes. We also have another very special guest. Her name is Ruma Devi, and she is a wonderful epitome of all that EntrepreNaari stands for. Namaste, Ruma ji, and a warm welcome to EntrepreNaari, a warm welcome to Aspire for Her. Namaste ji. But to introduce Ruma Devi, I will request Navya Nanda to take it on from here and let Ruma Devi also tell her own story to all of us.
Thank you everyone for being here today, and a big thank you to Amazon Saheli for allowing us to bring this opportunity to all our entrepreneurs. We are very, very excited about this and the possibilities that it can bring to everyone here today. Quickly, I'll just explain what this partnership is and exactly what we'll be offering to entrepreneurs. So we are collaborating with Amazon Saheli, and what this cohort will have access to is Amazon will personally provide training to everyone who joins the cohort to register on their platform. They will also hold training sessions on how to sell on Amazon. They will also provide an account manager for the initial days of you joining the Amazon platform, and they will also help support with any imaging of your product or brands or any cataloging that you would need for your initial launch on Amazon. They will help you and handhold you through setting up your account and also understanding how to manage the account on Amazon. And we will also have a special reduced referral rate of 12%. So we are very, very excited about this, and a big thank you again to Amazon for letting this, become a reality today. But like Madhura said, I think I would, want to hand it over to somebody who cannot personify the word entrepreneurial better, Ruma ji. And I know that my introduction will not do justice to what she has done and achieved and made all of us feel as women today, but I will try. So Ruma ji is a social worker, fashion designer, and a traditional handicraft artist from Barmer, Rajasthan. She has also in 2018 received the Nari Shakti Puraskar, which is the highest civilian honor for a woman in India. And she is associated with a network of 30,000 rural women who she has trained and linked to earning and livelihood and financial independence. She has also been on KBC. She has also been invited by Harvard University as a panelist in its conference, in its 17th All India Conference. And she has, been on the cover of India Today magazine. And, there is a very, very long list of all the amazing things she has achieved. But we are very excited to have her here. So I would, want her to join in now. Namaste, Ruma ji. Thank you so much. हमारे साथ आज यहाँ मौजूद होने के लिए आप बहुत पहले तो बहुत सुंदर लग रही है हमें ये ड्रेस कोड का मेमो नहीं मिला लेकिन थैंक यू सो मच कि आज आप पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आई और इस लॉन्च का एक हिस्सा बनी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है तो थैंक यू सो मच थैंक यू नव्या जी इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया रुमा जी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कम्युनिटी को प्लीज जी आप सभी को नमस्कार आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी मेंबर्स को मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ और बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर रावतसर गांव है वहां मेरा जन्म हुआ था और मैं 4 साल की थी तब मेरे माताजी का देहांत हो गया था उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई और मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया स्कूल में आगे पढ़ाई नहीं कर पाई उसके बाद घर के काम की जिम्मेदारी आ गई और उसके बाद यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी तो मेरे पास बैलगाड़ी होती थी मैं पानी लाने का काम करती थी और जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम है वो जरूर सीखती थी लेकिन 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड का 5वीं में तो ऐसा स्थायी रोजगार हमारे पास था नहीं क्योंकि यहाँ पे खेती का काम भी अगर होता है तो साल में 3 महीने होता है वो भी अच्छी बारिश होती है तो नहीं तो वो भी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में फिर शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस में प्रॉब्लम थी और अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी और वो मैं नहीं दिला पाई उसको नहीं बचा पाई तो उस टाइम मुझे लगा कि अब जिंदगी में जी के क्या करना है ऐसे नेगेटिव थॉट आने लगे क्योंकि पहले बचपन में माँ को खो दिया फिर बच्चे को खो दिया तो ऐसे विचार आ रहे थे कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है जिंदगी ही खत्म कर लूं लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा पॉइंट आया कि मैं अगर कुछ काम करूंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मेरा घर भी आसानी से चल पाएगा तो ये सोचा लेकिन एक गांव की
कम पढ़ी लिखी महिला के पास में ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं कि कहीं जाके जॉब कर लो, यहाँ तक भी पॉसिबल नहीं था कि किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम भी मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर मैंने सोचा कि जो गांव की बहनें हैं वो मायके जरूर जाएगी, और मायके जाती है तो बैग अच्छा जरूर लेके जाती है, तो मैं क्यों ना इनके लिए बैग बनाने शुरू करूं। तो ये सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया और एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। लेकिन बैग की जो स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर मैं हिम्मत हारने लगी। फिर मैंने सोचा मैं अकेली तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे जैसी और भी गांव की बहनें हैं, उनके पास भी काम नहीं है, मैं हम मिल के कर सकते हैं अगर मैं बात करूं उनसे। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया, और 10 महिलाओं ने मिलके हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, एसएचजी बनाया, और 100-100 रुपए इकट्ठा करके हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम की शुरुआत की थी। लेकिन ये भी पॉसिबल इतना आसान नहीं था कि हमने काम की शुरुआत कर दी। अब हम 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं के लिए काम कहाँ से आएगा। तो फिर हमने इधर उधर काम की और तलाश करनी शुरू की कि हमें कैसे काम मिल सकता है। तो फिर किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में कि वो महिलाओं के लिए काम करती है, शायद आप उनके पास जाओगे तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो हम 2-3 महीने इकट्ठे होके वहां गए। वहां पे संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले और हमने बोला कि हमारा समूह है और हम काम करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर पाओगे। तो वो पहले से ही महिलाओं को काम से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। और वो हमें देख के बोले कि महिलाएं खुद आके काम के लिए बोल रही है, मतलब वो एकदम असंभित थे। तो फिर हमने बोला कि नहीं, हमें तो काम की जरूरत है, हम काम करना चाहते हैं, हम इसीलिए आए हैं। तो फिर हमें सैम्पलिंग का काम दिया गया, सैंपल अच्छे बने, फिर हमें ऑर्डर का काम दिया गया कि ये 3 दिन का काम है, ये आप करके लेके आइए। तो उस दिन पहली बार हमें काम मिला था, बहुत खुशी हुई थी। हम घर जाके काम पे लग गए और सुबह वापस गए। तो हमें देख के वो बोले कि कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए, आपसे काम हुआ नहीं। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं, हम पूरा काम करके लेके आए हैं। तो फिर 3 दिन का काम एक रात में कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा खुशी इतनी थी कि हम पूरी रात बैठ के काम किया। तो ऐसा काम हुआ कि उनको भी लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। फिर हमने बोला कि हमारे यहाँ पे रेगिस्तान में रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियों में जो महिलाएं बैठी है, उनके पास में रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उनके लिए काम करना है, हम कैसे करें। तो फिर एक मीटिंग में ये तय हुआ कि आप है ना एग्जीबिशन करिए, एग्जीबिशन के जरिए आपके जो प्रोडक्ट है वो हैंड टू हैंड सेल हो जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे, इस तरीके से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा एग्जीबिशन होता कहाँ है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, मेट्रो सिटीज में, जहाँ दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर ऐसी जगह पे आप एग्जीबिशन करोगे तो वहां पे होगा। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक हम कभी गए नहीं, और मेट्रो सिटी हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले तो घर वाले भेजेंगे नहीं, और हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हम हिंदी में बात भी नहीं कर पाएंगे। तो काफी सारी दुविधाएं थी, मन में चल रही थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे एग्जीबिशन करना ही है। जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेल के लोकल डब्बे में बैठ के हम दिल्ली पहुंचे। 2010 में मुझे फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मौका मिला था दिल्ली में, रफी मारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और वहां पे 3 दिन का एग्जीबिशन था, उसमें 10 से 15 हजार रुपए की सेल हो गई। वहां से फिर हमने ठान लिया कि नहीं, नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम अच्छी तैयारी करके आएंगे। वापस जाके हम गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप किसी के घर में जाके महिलाओं से बात कर सके। यहाँ पे उनके घर पहुंचने के बाद में उनके घर वालों के कई क्वेश्चन होते थे, पता नहीं आप कहाँ से आए हैं, इनको क्या सिखा के जाओगे, कल इनको कहीं जाने को बोलोगे, तो ऐसे क्वेश्चन होते थे। तो हम एक बार तो सोचते कि इतनी दूर धूप में आए हैं और ये महिलाओं से मिलने भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कि हम जो काम कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन जब महिलाओं से बात होती तो लगता कि नहीं, इनको काम करना है। तो फिर घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर का सारा काम करके दिन में जो भी इनको दे 2-3 घंटे टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देगी, इनको घर बैठे हम काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ बहनें हमारे साथ में जुड़ी, और उनको पास में जब इनकम आनी शुरू हुई तो पड़ोस की और भी बहनें साथ में जुड़ने शुरू हुई। तो ऐसे करते करते हमने जो 2008 में 10 महिलाओं से शुरुआत की थी, आज हमारे साथ में 30,000 से ज्यादा बहनें जुड़ी हुई है। और इतना ही नहीं कि हमने उसके बाद में इंडिया में एग्जीबिशन की है, लेकिन
नेक्स्ट जो एग्जीबिशन था वो हमारा पूरी 11 लाख की सेल की हमने। तो वहां से हमें लगा कि नहीं, हमें हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं इसमें हमें नवाचार करना चाहिए। फिर हमने पहले हम सिर्फ होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना गारमेंट्स बनाए जिसमें और ज्यादा लोग खरीदेंगे, क्योंकि पहनने के कपड़े तो बार बार खरीदे जाते हैं। तो ये सोच के हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया। पूरे इंडिया के जो हैंडलूम का फैब्रिक होता है, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी, ऐसा फैब्रिक लेके उस पे फिर हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। काफी दिक्कतें आई क्योंकि हम तो साड़ी पहनते भी नहीं है। तो साड़ी फर्स्ट बार बनी तो हमारी उल्टे पल्लू की बन गई। वो जब कस्टमर ने देखा कि बहुत सुंदर साड़ी बनी है लेकिन पल्लू उल्टा है, तो हमने सोचा कि नहीं, हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाएंगे। तो ये जो कस्टमरों ने हमें एडवाइजरी दी उस हिसाब से हमने उसमें और नवाचार करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब हमने पहनने के लिए प्रोडक्ट तो बनाए, लेकिन फॉल्ट की वजह ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमने एप्लिक में पहने हुए कैसे लगेंगे। तो एक बार हमने सोचा कि अब हम कैसे करें। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो फैशन शो के तो नाम से ही हमें डर लगता था कि हम फैशन शो क्यों करें, कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता होगा। फिर किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें फैशन शो करना चाहिए, लेकिन एक आर्टिजन को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा। तो काफी इधर उधर हमने कोशिश की लेकिन हमें मौका नहीं मिला। लेकिन बाद में राजस्थान में ही, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स लोग, अवार्डी लोग वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो करोगे। तो हमने जिद की, नहीं, हमारी एक बार आप हमें मौका दीजिए, हमारी इच्छा है, हमें फैशन शो करना है। वहां से मौका मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, उनके कलेक्शन के साथ में हमारा कलेक्शन कैसा बनेगा, क्या कलर थीम लेंगे, क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे। तो ये दुविधा थी। तो हमने सोचा कि हम और बड़े एनजीओ से मदद मांगते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो हमने वहां जाके बोला तो उन्होंने ये बोला कि रोमा जी, ये आपका लेवल नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, ये आप जिद छोड़ दीजिए, आप जहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूंगी, ये ठान लिया था। जैसा हमें समझ में आया हमने हमारा कलेक्शन बनाया। और जब रैंप का टाइम आया तो बहुत डर लग रहा था कि हमारे प्रोडक्शन कोई पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो वहां पे जो ऑडियंस थी वो और डिजाइनर सब खड़े होके तालियां बजाई, और नेक्स्ट शो के लिए 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे अपना नेक्स्ट कलेक्शन बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने वो फैशन शो किया। उसके बाद में मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी, तो ट्राइबल आर्टिजनों के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाने लगे। उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। तो ऐसे उसके बाद में हमें लगा कि हम इंडिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन करेंगे तो हमें और ज्यादा काम मिल सकता है, हम और ज्यादा बहनों को जोड़ सकते हैं। ये सोचा ही था। उसी टाइम मुझे जर्मनी में हिम टेक्सटाइल करके फ्रैंकफर्ट मैसे में एक बड़ा एग्जीबिशन होता है, वहां से मेल आया कि हम इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। मैंने कहा, खुशी का ठिकाना नहीं था कि हमने सोचा था हमें बाहर जाना है लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था। तो हमने इधर उधर पूछा कि वहां का मौसम कैसा होगा, हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है तो वहां पे खाने की क्या दिक्कत हो सकती है। तो किसी ने बोला कि आप कुछ खाने पीने की चीजें साथ में लेके जाना, दिसंबर का महीना है तो ऐसे सर्दियों के कपड़े लेके जाना। तो हम यहाँ से आटा, सब्जी, मसाला सब साथ में लेके गए, वहां जाके रोटियां भी बनाई और वहां के लोगों को भी खिलाई। और वहां का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत शानदार था, क्योंकि जब मैं मेरे बूथ पे बैठी थी तो एक 10 महिलाओं का ग्रुप मेरे पास आके खड़ा हुआ और मैंने उनके सामने देखा तो उनके आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि आपको देख के हमें हमारा मुल्क याद आ गया, आप इंडिया से है ना। मैंने कहा हाँ। तो आपका पहनावा देख के हमें, हमारे नानी दादी, किसी की दादी इंडिया से थी, किसी की नानी इंडिया से थी, तो वो उनके आंखों में आंसू आ गए कि हमें हमारा मुल्क याद आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ हम हमारे पहनावे के साथ में आए हैं, तो हमें ये नहीं बताना पड़ रहा है कि हम इंडिया से आए हैं, लोग हमें बोल रहे हैं कि आप इंडिया से आए हैं। तो इस तरीके से उसके बाद में जर्मनी के बाद में सिंगापुर, दुबई, यूएसए, कई जगह पे हमने एग्जीबिशन किए, फैशन शोज किए। और इसी बीच में कई अवार्ड भी मिले, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे के काम के
लिए भी कोई अवार्ड भी मिलता है। सबसे पहले जिला कलेक्टर के हाथों से मिला तो हमें हिम्मत मिली कि नहीं, हमें और अच्छा काम करना चाहिए। उसके बाद में राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से मिला। उसके बाद में जब राष्ट्रपति जी के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम दिल्ली जाते, दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन अंदर जाके सम्मान लेंगे ये कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद जब केबीसी से कॉल आया था तो मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि केबीसी से मेरे पास कॉल आएगा, क्योंकि मैंने सोचा ये फेक कॉल होगा, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी। रुमा जी आप म्यूट पे हो गए। लेकिन नेक्स्ट डे और कॉल आया कि नहीं, हम सोनी चैनल से ही बोल रहे हैं और फ्राइडे को हमारा स्पेशल शो होता है, उसमें हम क्रमवीर अवार्ड भी देते हैं और इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद उनका मेल आया, फिर उनकी टीम पहुंची बाड़मेर में, 5 दिन वहां पे शूटिंग चली, फिर हमें बॉम्बे बुलाया गया। एक दिन पूरा हम अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठ के वो शूटिंग की और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस बताए, बहुत अच्छा हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। This is such an amazing journey, रुमा जी। मतलब ये सुन के मेरे पास इतना मैसेजेस आ रहे हैं कि सबका आंखों में आंसू आ गया आपके ये पूरा जर्नी सुन के। और आपने बहुत बहुत मोटिवेशन दिया सबको। हमारे जो पूरा कम्युनिटी है, जो एंटरप्रेन्योरी कम्युनिटी है, वो आज आपके साथ है और हमारे साथ वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपके लिए चीयर कर रहे हैं। एंड आई रियली वांटेड टू इस बीच टेक में मैं 1 एक सेकंड। बात और बताना चाहूंगी प्लीज कि रुमा जी। हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमारे पास में इनविटेशन आया था कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा राइट। मैं तो ना तो अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, ना कॉलेज के बारे में सोचा, हार्वर्ड में जाके मैं क्या करूंगी। तो ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और पहले तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहां पे, लेकिन उसके बाद वहां गए और वहां जो एक दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला, तो मुझे लगा कि ये तो इतना अच्छा मौका हम गंवा देते। बहुत अच्छा रहा वहां का भी एक्सपीरियंस हमारा। और उसके बाद मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर से। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग रुमा जी। इन्हें आपके बात सुन के मैं 5 सेकंड के लिए सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जूम में जो थोड़ा सा हार्ट होता है रिएक्शन में, आप लोग रुमा जी के ये स्टोरी के लिए प्लीज हार्ट लगा दीजिए आपके जूम स्क्रीन पर। एंड दिस इज जस्ट आवर वे रुमा जी ऑफ फॉर्मली वेलकमिंग यू एंटरप्रेन्योरी में। आपको बहुत बहुत वेलकम, स्वागतम। एंड वी रियली रियली लव योर स्टोरी। एंड आपके साथ हम बहुत प्राउड है और बहुत ही हम्बल्ड है कि आपने हमें एक काम दिया है एंटरप्रेन्योरी में। आपने बोला कि आई वांट टू वर्क विद एंटरप्रेन्योरी एंड आई वांट टू डू समथिंग जो कि आपके जो 33,000 आर्टिजन्स है आपके साथ, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके और हम लोग सब मिल बांट के वी कैन एक्चुअली पुट टुगेदर अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू। हमारे पूरा जो कम्युनिटी है रुमा जी आपके लिए हार्ट्स डाल रहे हैं, आपके लिए प्यार सम्मान एवरीथिंग इज फ्लोइंग थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। एंड ये स्टोरी आप अगर नहीं बताते तो आई थिंक none of us would have known about this. None of us would have known that you stand for the true strength of the word Nari in EntrepreNaari. और नव्या और हमने जब ये नाम चुना था, and Anuradha is also here. Anuradha actually put the name together. ये नारी का पीछे हमारा एक आइडिया था, एक आइडियल था। और आप एक्चुअली आज आपकी जो स्टोरी है दैट स्टैंड्स फॉर दैट ट्रू स्ट्रेंथ। वो जो शक्ति, उसका जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दैट स्पिरिट, ये स्पिरिट एंटरप्रेन्योरी का स्पिरिट आप एम्बॉडी करते हो। सो रुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ EntrepreNaari. We are very proud today. We are very very happy that you are here with us.
थैंक यू। जो मैं नहीं कर पाई तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो हमारी बहनें कर पाए, क्योंकि अभी मेरे पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजीविका करके है, उनके साथ में लगभग 2.5 लाख समूह बने हुए हैं और 28 लाख बहनें जुड़ी हुई है। तो उनका मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना के एक नई जिम्मेदारी दी गई है। तो उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। और इसी तरीके से जैसे मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी, आज भी कई लड़कियों की स्कूल छूट जाती है, स्कूल दूर होती है या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती है, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं जिससे वो अपनी पढ़ाई है वो आगे जारी रख सके। हम बेटी बचाओ पे भी काम कर रहे हैं कि जैसे बेटे के जन्म पे खुशी हो, वैसे ही बेटी के जन्म पे भी घर में खुशियां मनाई जाए। तो इसके लिए हम बेटी के जन्म पे 20,000 रुपए की एफडी करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं। जब वो बड़ी होगी तो उनके लिए आगे के एजुकेशन के लिए खुद के पास में पैसे होंगे। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जब पढ़ लिख के खुद सक्षम बनेगी तभी वो आगे तो और महिलाओं को सक्षम बना पाएगी। मैं 8वीं में पढ़ती थी तब मुझे एक बार टूर्नामेंट जाने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद में न मेरा स्कूल हो पाया और न मैं स्पोर्ट्स में आगे जा पाई। तो मेरे मन में आया कि मैं दिल्ली में थी, ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर। जब मैरी कॉम से परिचय हुआ मेरा, तो मुझे लगा कि मैरी कॉम 3 बच्चों की माँ है, उसके बावजूद बॉक्सिंग में इतने गोल्ड मेडल लेके आई है। तो हमारे राजस्थान की जो लड़कियां हैं वो कितनी टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास में ऐसे संसाधन नहीं है जिससे वो आगे के लिए प्रैक्टिस कर सके, आगे जा सके। तो ये सोच के हमने ऐसा सोचा कि हम क्यों ना वहाँ पे एक ऐसा स्टेडियम बनाए जो पूरा इंडोर हो, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को इतना अलाउ नहीं होता है। तो पूरा इंडोर रहेगा तो वो हर समय प्रैक्टिस कर सकती है। तो यही सोच के हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और अभी हमारे स्टेडियम का काम चल रहा है और लगभग वो 10 से 12 करोड़ की लागत से पूरा तैयार होगा और उसके माध्यम से हमारे यहाँ के भी बच्चियां आगे जा पाएगी। इसके साथ में हम महिलाओं के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो गांव में रहती है महिलाएं वो ढाणियों में अकेली रहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर कहीं मजदूरी पे जाते हैं। तो उनकी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इंतजार करते हैं कि मेरे हस्बैंड घर पे आएंगे फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, चाहे वो आंखों के संबंधित हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमारी यहाँ से मोबाइल वैन जाती है, डॉक्टर्स की टीम जाती है और उनके आई चेकअप करती है, हेल्थ चेकअप करती है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे वगैरह देती है। तो इस तरीके से हम पूरे गांव में जो महिलाओं को तकलीफ होती है वो ना हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और अभी हमने एक और बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है कि हमारी जो महिलाएं काम करती है वो अपने अपने घरों में काम करती है, तो हर घर तक तो कोई पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हम एक ऐसा स्मार्ट विलेज तैयार करना चाह रहे हैं जो हर महिला को वहां पे सुविधा मिले और पूरे इंडिया से हमारे पास में इंटर्नशिप करने आते हैं बच्चे, उनको सुविधाएं मिले। और लगभग उस गांव से 100 गांव कनेक्ट होंगे। तो आज हम उनके साथ में हैं, तब उनके घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कल हम ना हो तो भी उनका काम चलता रहे। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमें आप जैसे लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा, क्योंकि हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी गांव की बहनें वो सक्षम बने, उनके भविष्य खूबसूरत बने। एब्सोल्युटली, मतलब फ्रॉम हेल्थ टू स्पोर्ट्स टू लीडरशिप एंड गांव के बहने के लिए आप जो कर रहे हैं, फ्रैंकली कोई कंपैरिजन नहीं है रुमा जी। हमने आज तक आई थिंक वी हैव नॉट मेट एनीबडी लाइक यू, एंड दैट इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग अक्रॉस, एंड इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरी टीम है, हमारे इन आवर ओन स्मॉल वे हम जो भी कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। एंड आपको पता है कि हमने एक स्ट्रैटेजी टीम भी सेटअप कर दिया है जितेन अग्रवाल जी के साथ, ताकि जो भी रुमा जी के पूरा समूह के लिए रिक्वायर्ड है टू मेक इट इनटू अ सस्टेनेबल मॉडल एंड टू सी ऑल दीज ड्रीम्स ट्रांसलेट इनटू रियलिटी, ये हम करेंगे आपके साथ। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड है और प्रिविलेज है कि हम आपके साथ ये कर पाते हैं। थैंक यू सो मच रुमा जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरी। बट द रीजन why we actually invited you here for this session was really about launch of a beautiful initiative, launch of a beautiful strategy
for us, and that is the launch of Amazon Saheli. ये जो Saheli जो है, even this word is a very beautiful word because it is all about friendship. It is all about helping entrepreneurs get to the next level. And with that, I would love to invite Swarnim Sinha here and talk a little bit to him, and he will tell us about what exactly is Amazon Saheli. As all of us know, Ruma ji is actually on Amazon Saheli, and we have actually given a challenge to Swarnim and his team to say that we need to see the full potential of Amazon Saheli for Ruma ji as well. Ruma ji's products are beautiful, not only, of course, for her, but the entire community that she supports. Beautiful products, and we thought that it would be a beautiful bridge between Amazon and the heart and home of our country, all the Naris out there, to actually launch Saheli here. So with that, I want to introduce Swarnim to all of you. And Swarnim, first of all, apologies, because after Ruma ji, it is a tough act to follow. It is a tough act to follow. Completely agree on that. Yes. Sorry about that. Sorry about that. But I will introduce Swarnim, and he and his team are doing an amazing job. Swarnim heads direct sales for Amazon India. He carries over 17 years of experience in sales, brand, and marketing within the consumer goods industry. He believes in consumer insights being the central building block to building business success, and persistently challenges the status quo to unearth new opportunities. And what better than getting Ruma ji here as a part of Amazon Saheli launch to challenge the status quo and to unearth new opportunities. So warm welcome to EntrepreNaari, Swarnim. A warm welcome to Aspire for Her. We would love to hear from you what Amazon Saheli has in store for us. Thank you, Madhura. In fact, first of all, it's a pleasure for Amazon and me personally to be part of this forum. I would actually like to thank Aspire for Her for the work you folks are doing. It is truly symbolic of women entrepreneurship and women empowerment. I think just thank you, Madhura and team. Thank you, Navya, for creating this space for women. And Ruma Devi ji, आपका जो real life story है, I think it is better than a lot of real life stories that we see आजकल हम देखते हैं. एक चीज अगर मैं बोलूं जो आपकी पूरी कहानी में मुझे लगा कि अगर वो लक्ष्य अगर हमें पाना है तो नए विचार और मेहनत का जो कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब I can truly see it in your story. So I think thank you for being that inspiration and being here to inspire. Thank you, Ruma Devi ji and Madhura and Navya. I'll straight get into the basics of Amazon, basics of online selling, and maybe because काफी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, I was going through some of the names. I don't know how to do it. You can just type whether how many of you are already selling online, not Amazon but online. Just type in the chat. Just yes if you are selling online, no if you're not selling online, but thinking. Okay, lot of responses. Yes, no. Thinking. Okay. Mix. Very nice. Okay, so what I said, I'll also mix. आप में से काफी सारे लोग हैं जो already बेच रहे हैं. आप में से a few of you are thinking to sell online. So I'll try and balance the next 10 minutes of what I speak is. Yeah, I'll try and balance on selling online. And as we move, starting with the partnership, I'll just request everyone to be on mute. I can hear some feedback if that is the case. Okay. Yeah, can we move to the next slide on the partnership? So what is Amazon Saheli? Okay, essentially, ये program has specially for women entrepreneurs, giving them the space
to grow their business, giving them the opportunity to sell, get noticed, as Madhura said, across the country. Okay, it is a dedicated program जो हम women entrepreneurs के लिए run करते हैं, जैसे रूमा जी है और आप में से काफी लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, and it is from across cities. हमारे tier 1 सिटी में से काफी लोग हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से है, चेरापूंजी में से है, कन्याकुमारी में से. इट्स अ प्रोग्राम विच इज पैन इंडिया. अगर आप देखें तो टिल नाउ it's been almost 3 to 4 years जब से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था. We have in a way touched lives of around 2 lakh women through this program. Finally what matters online is आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और it is not just about doing a business, it is doing the business जो customer benefit भी दे. हमारे पास through Amazon Saheli आज more than 1 lakh products listed है जो हर कैटेगरी में है, वो कपड़ों की कैटेगरी में हो, होम डेकोर की कैटेगरी में हो, कंज्यूमेबल्स मतलब फूड कैटेगरी में हो, या ऑटोमोबाइल कैटेगरी में हो. हम ये पार्टनरशिप रन करते हैं थ्रू फॉर एग्जांपल जैसे आज एस्पायर फॉर हर है, हमारी कुछ गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स है थ्रू विच वी रन दिस पार्टनरशिप्स, एंड वी आल्सो डू डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग ऑन Amazon. जो एक बेसिक नेसेसिटी है या जो एक क्राइटेरिया है जो एक प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए चाहिए होता है कि वो बिजनेस विमेन के नाम पे हो. तो इंडिया में अगर आप कहिए कि बिजनेस का लीगल हुआ टर्म GST, तो अगर आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं इट इज इन द नेम ऑफ अ वुमेन, वेदर इट इज यू, वेदर इट इज अ मदर, वेदर इट इज योर डॉटर, सिस्टर, you can enroll into Amazon Saheli. Okay, so this is a very basic about Saheli. आप में से काफी लोग also do lot of handmade products, जैसे रूमा देवी जी भी बोल रहे थे, और काफी लोग हैं जो local हमारे जो products बिकते हैं. We can move to the next slide also, प्रीति. तो हम within Saheli also हमारा एक प्रोग्राम है which is कारीगर, जो है handmade प्रोडक्ट्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए, वीवर्स के लिए, विच इज रियली द क्राफ्ट ऑफ इंडिया. अगर टू द लास्ट नॉलेज आई हैव, इंडिया हैड 400 प्लस जोग्राफिकल क्राफ्ट्स. ओके, जोग्राफिकल क्राफ्ट्स मतलब जो हम किसी लोकेशन के नाम से जानते हैं, जैसे कच्छ की एम्ब्रॉयडरी हो गई, शोलापुर की चद्दर हो गई, मधुबनी पेंटिंग्स हो गई, इक्कत हो गया, या मैसूर सिल्क हो गई. सो आई थिंक सम ऑफ दीज आर द प्रोडक्ट्स जो हम कारीगर के थ्रू एनरोल करते हैं. ये हमारे जो लोकल आर्टिजन्स है, हमारे जो क्राफ्ट्समैन है, उनको बढ़ावा देता है. तो अ लॉट ऑफ यू व्हाइल यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप कनेक्टेड होते हैं इन लोगों से, एंड थ्रू दिस अगेन वी हैव इम्पैक्टेड और वर्कड विद 18 lakh plus weavers or artisans. 2 lakh plus products are on selling on Amazon which are handmade, and that is very unique to India. I think लाइक रूमा देवी जी ने बोला कि जब वो ये ड्रेस पहन के जर्मनी गए तो आइडेंटिटी खुद क्रिएट हो जाता है, राइट? तो दिस इज दैट कैटेगरी जहां पे आपकी आइडेंटिटी, आप क्या सोच रहे, आप क्या कैसे सोच रहे, सब क्रिएट हो जाती है खुद ही के लिए. इवन हियर वी वर्क विद गवर्नमेंट, वी वर्क विद पार्टनरशिप्स, वी वर्क विद डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग. ओके, नाउ द बिग क्वेश्चन इज, जैसे आप में से काफी लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बेच रहे हैं, काफी लोग सोच रहे हैं, व्हाट इज द रियल डिफरेंस ऑफ सेलिंग ऑनलाइन टू मे बी ऑफलाइन. ऑफलाइन कहे तो आपका खुद का स्टोर है, आपका खुद का एक मार्केट एरिया में आपका लोकेशन है, वर्सेस ऑनलाइन. ऑनलाइन इज लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, ठीक है, उसमें आपका स्टोर है. तो व्हाट इज द की डिफरेंस? एंड on my next slide, where we'll move to now, is I will explain you difference and the support that each of you can get through these programs which are Karigar or Saheli. So पहला तो है launch. Okay, आप अपना launch कैसे करेंगे business? How do you start selling online? So अगर आप offline बोलेंगे तो आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, आपको लोग लेने पड़ेंगे, आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा. You will have to figure out legal procedures and sanctions. Online mein the launch happens digitally, right? Everything is on computer.
तो आपको एक GST ID चाहिए और उसका एक लॉन्च प्रोसेस होता है. No matter how simply or how simple we have tried to make the launch process, it is still something which needs multiple steps to happen. And that is where we help you to get your business launched on Amazon. It may take 10 steps, and many times काफी लोग वहां स्टिक हो जाते हैं. अच्छा, ये GST नंबर डाला, OTP नहीं आया, मेरा OTP तो मैंने अपने CA का नंबर दिया हुआ है. So a lot of those things happen where we support you to get your business live through an account manager or through a dedicated team. Okay. दूसरी बात हो गई, जो ऑफलाइन में अगर आप बोले कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके रेंट्स हुए, कॉस्ट हुए, इन्वेंट्री हुई, थोड़ा एडवर्टीजमेंट करेंगे, आप पैम्फलेट्स बांचेंगे, आप सोसाइटी में जाएंगे. सो दीज आर ऑल बिजनेस कॉस्ट, राइट? आप कभी कोई बिजनेस यू स्टार्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट टू स्केल अप. सिमिलरली ऑनलाइन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, while the cost is very minimal, like you can be based in Ranchi, you can be based in Indore or Raipur, and you can sell everywhere in India. So the costs are very little compared to offline channel, but still to support you, we offer a subsidized fee for these programs where aapka margin or the way you will be able to save that money and put back into your business, right? It's all about how much you can put back into your business. So there is a subsidized referral fee. I think Navya also did a very good job of explaining all of this in a minute, which I'm taking 10 minutes to explain, but she made my job really easy there. So there's a subsidized referral fee, jo selling fee hoti hai Amazon Pay for this program. The third difference is offline or online में, offline में आप कस्टमर से बात करते हैं, राइट? कस्टमर आया, आप उनको समझाते हैं, प्रोडक्ट है, बट आप काफी बिजनेस वुमेन से मैंने बात किया, बोलते हैं हम प्रोडक्ट है, हम जैसे बात करते हैं वैसे बिजनेस चलता है. ऑनलाइन में योर प्रोडक्ट टॉक्स, यू डोंट टॉक. ठीक है, आप कस्टमर से नहीं मिलते, आपकी प्रोडक्ट आपकी पहचान है. तो किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से आपने उसका इमेज किया है, फोटो किया है, डिटेल्स लिखे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग which is important because product speaks, not you. और वहां पे हमारी टीम सपोर्ट करती है, जो ये पार्ट हो जाता है कि अच्छा आप लिस्ट कैसे करोगे, क्या लिखना चाहिए मेरे प्रोडक्ट में, सोफा 6 चेयर लिखना है, डाइनिंग चेयर लिखना है कि लिविंग चेयर लिखना है, ऑल दैट डिटेलिंग कि आप लिस्ट कैसे करोगे और कैसे फोटो शूट करोगे. सो दैट इज एन एरिया विच वी सपोर्ट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन. फोर्थ इज प्रमोशंस, विजिबिलिटी. सो हम इंडिया है, आई थिंक इंडिया इज वन कंट्री, हर महीने हमारी एक फेस्टिवल होती है, राइट? और हर फेस्टिवल में हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खरीदते हैं, और सबसे बड़ा होता है ऑब्वियसली दिवाली हो गई, ईद हो गई, क्रिसमस हो गया. Similarly online, I also see a lot of questions, maybe we'll take that at the end. Similarly online में सेल होती है, right? And during ये स्केल हम आपको इनपुट्स देते हैं, आपके प्रोडक्ट को विजिबल बनाते हैं, आपको सजेशंस देते हैं कि अगर आप ये करेंगे, इस टाइप के डील चलाएंगे, इस टाइप के आप ऑफर देंगे, तो it will be beneficial for you and the customer both. So that is another offer that we support, that we offer. And finally, the last two is on after launch. Any business takes 2 to 3 months to stabilize. Chahe wo aap online ho, maybe offline ho, you will take 1 year to stabilize. But at least on Amazon, we have seen that anywhere between 2 to 6 months, aapka business, you understand. Like one of the things we have learned, online में रात को 12 बजे ऑर्डर आते हैं, ठीक है? आप में से अगर सब लोग ऑफलाइन है तो आप 9 बजे घर चले गए, अब आप अगले दिन देखते हैं कि अच्छा शॉप में जाओ. ऑनलाइन में रात को 12 बजे सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं और आपको शिप करना होता है. सो अ लॉट ऑफ दीज न्यू थिंग्स हैपन, जिसमें आपको हम सपोर्ट देते हैं ऑन पोस्ट लॉन्च थ्रू अ डेडिकेटेड AM फॉर अ सर्टेन पीरियड, जब तक आपका बिजनेस खुद स्टेबल हो जाए, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द support that this team will offer through this partnership with Aspire for Her, starting pre-launch कि आप आए कैसे Amazon पे, to post-launch to stabilize your business. Okay, we can move to the next one now. And you see, like
like we always talk about success stories, and those are inspiration for us. We are into a business of creating stories more than business, right? And I'll just call for 2 minutes Pooja, who's a colleague with me in team, because she works very closely with some of these uh, uh, our partners. And Pooja, if you can just take 30 seconds on some of these stories before I take it back from you. Sure, Swarnim, and thank you, Swarnim, for taking us through the programs. And I'll just take a few seconds to thank Madhura and the entire team for giving us the opportunity and making us a part of this connect. I really felt inspired and motivated hearing Ruma Devi's story, and everyone out there who's looking out to sell online, or everybody who's selling online. It's truly motivating for me, and I just wanted to convey this message, and thank you, everybody. I'll quickly move to the success stories. So, Tribes of India is a government emporium, which is a central ministry. This we had launched this government emporium in 2017. एंड जब हमने इस गवर्नमेंट बॉडी को लॉन्च किया था, तब हमने 1 लाख से ऊपर आर्टिसंस के साथ ऑन बोर्ड किए थे हमने, with about 10,000 and more products. We have not only just launched these artisans, but जब हमने Tribes of India launch किया था, then we also launched Karigar Mela into our Karigar program, which was only a dedicated sale event जो हम सिर्फ कारीगर के लिए कर रहे थे, and we wanted to ensure that जितने भी artisans के products हम offline और online offer कर रहे हैं, that should get more visibility or that should get more awareness, because हमें नहीं पता होता है कि अब जैसे बहुत सारे arts होते हैं, इक्कत, डोकरा, blue art, pottery, and they are restricted to regions currently if we're selling on offline. But when we bought it online, we wanted to ensure that लोगों को पता चले, लोगों को पता चले, and they could buy it online. So hence we launched this program, and we ensured that by doing this event, we can reach out to a pan-India level where people could buy products from restricted regions. So we were able to create an impact not only in the artisan's life, but we were also able to create the awareness among the customers about the handmade products, which is currently lost in the current generations, where we mostly look out for modern arts, but we have forgotten our, the long lost handmade products. So that was the initiative that we wanted to create in Tribes of India. And yeah, we were able to create that 1 lakh plus artisans life impact there. We can move on to the next slide. Yeah, so Himalayan Origins is a story of a very young entrepreneur, Neha Parmar. She also had a very unique idea with herself, that she wanted to bring back those grandmom recipes in the beauty industry. So currently, if we look at our beauty industry, we all go behind those chemicals, or we all go behind those instant results that we want to get into, if we had a hair fall, or if we are aging, or if something wrong with our skin. But we have forgotten that how unique and how much a grandmom's recipe can create a difference in our skin or in our body. And she wanted to bring that, so she started this brand called Himalayan Origins, where she introduced those grandmom recipes back into the beauty industry. Her hibiscus oil is a pure handmade oil. Apart from that, there are a lot of products that currently she is making, and we launched her into the platform because her idea was unique, and we've somehow lost those beauty recipes. And we were able to cater to this particular handmade product across India, and now she is one of the most successful entrepreneur brands with Amazon Saheli. Yeah, mudwork is again basically a karigar, basically a karigar art, and Maji Khan had introduced this. Now, to tell about Maji Khan, he was a 10th pass. A guy who wanted to do something different and maybe not just get into the educational world. And what he did is he started his own artwork. So to give you a glimpse about mudwork, so mudwork is a art which was done only in the regions of Kutch, located in Gujarat. और इसको बनाया जाता था
अपने घरों को ठंडा रखने के लिए. But Maji Khan ने सोचा कि this art could also become a decor, or this art could also become something unique just apart from the keeping the house cool. So what he started doing is he started making these home decor items, but इनके items was restricted only in the exhibitions and fair जो गुजरात के कच्छ area में होते थे. And he was not able to go beyond that. One fine day, he found Amazon and he registered in Amazon with a ray of hope that he will be able to, come across with more orders. And when we onboarded Maji Khan Mudwork Art in our Amazon Karigar program, we were able to reach out to a pan-India orders. He ensured the packaging is intact, जहाँ पे products break नहीं होते हैं. So these were some little fragile items, but his dedication to ensure that the art reaches out across India was a fabulous journey. And yeah, that's it from my end. Over to you, Sunil. Yeah, thank you, Pooja. So this is just to give us some idea कि किस type के crafts, कहाँ से हम we see inspiration and we are able to work with them. So looking forward to everyone on this call. If you have an idea, it's time. Okay. And yeah, we can move, Preeti. So just to close and give it back to Madhura, I think we are very excited to partner with Aspire for Her to start EntrepreNaari journey. And those are already there to partner you in making the best of it. So thank you, everyone. And I'm sure we'll have Q&A at the end. I can see a lot of questions. But Madhura, back to you. Sorry, we have one more slide. Yeah. Not in Amazon, we don't do slides. So new for us. So next steps, should we take this now, Madhura, or? Yeah, I think, Swarnim, let's launch it formally. And for that, I'd request Ruma ji to get back into this virtual stage of ours. And we will also get Navya. And there, Ruma ji is right there. And we will just sort of formally launch it. And perhaps, yeah, fantastic. I think all of us are here. So, Preeti, if you can just sort of put up the formal launch of the partnership. This is a good moment for all of us, and we hope that this is the beginning of many, many exciting journeys like the ones that you have discussed, Swarnim. And we would love Ruma ji to do the honors and, and declare that we are formally launched and this partnership is formally launched. So maybe all of us can just do a little re-sign, if you like, and, ensure that we sort of declare it launched. Ruma ji, aap hi thoda re-sign kijiye. Thank you, Ruma ji. Thank you. Thank you so much. So this is simple online launch, but we hope that this will truly change lives. And after this, Swarnim, we request you to give all the specifics. There are lots of questions. We would love to dedicate the next few minutes to taking audience questions. But after you give the specifics of what this cohort will mean, what will they get, and what is the expectation that they should sign up for. We're live now, so you can actually apply on the link itself to sign up. This QR code is right here. Preeti's also put it on the chat, and you can just give in your basic details, and we will be ensuring that the announcements of the selection of the cohort will happen very, very soon. We'll work together with Amazon and with our teams to ensure that we get the first cohort off the ground very quickly, and we work towards all success for the first set of cohort. But this is not the only thing that we will do. We will keep bringing in partnership opportunities like this. And I'm sure Amazon will also keep bringing in lots of inspirational stories for us. But back to you, Swarnim. Tell us about what the cohort members can expect and what are the next few steps for us. Yeah, so the way I think we are looking at it for everyone, and Madhura, we discussed this. Once we have all the invites in and whoever is interested to join us, we'll just go through each of the businesses and
depending on the fitment, like we said, it needs to have a women owner. It needs to have, if you're applying for a karigar, it needs to have handmade products. So we will select the businesses which do pass those criteria. And then, yes, then it's just, that's the step, and that's where we take it forward. No more, that's as brief as it can be. Yes. Fantastic. So I think any questions, we'll open up for questions now. There are lots of questions on the chat box already. So we'd request any questions for Swarnim. Yeah. Hi, Swarnim. This is Sneh here. Madhura, I'm sorry I'm taking this quickly because I need to rush. I have another call. Swarnim, we run a small brand, but we are already there on Amazon. So can we move under the Saheli Aspire for Her blanket umbrella there? Sorry, I missed your name. Sneh Sharma. Sneh. Brand Okay, name sorry. Asili. Okay, Sneh Sharma. So yeah, see, there are certain programs. Now, obviously, we'll see, because you're already doing on business. I'm assuming if you have stabilized, whether some of these benefits will be beneficial for you. I would say there will be a chat link or a contact number we are going to share. Share your details in with the team, and we will evaluate it and come back to you. Because I understand you. Yeah. The reduced referral fee would definitely be an advantage. Yeah, I understand that. So we'll just see if it fits the program guardrails. The team will fairly evaluate it. Is how I'll put it. Sure. Thank you. Can I go next, Madhura? Hello. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Thanks. Hi, Swarnim, and thank you, everyone. Here, it was an amazing session. My name is Kajal. I'm actually a nutritionist and a founder of a nutrition brand. We were very much offline pre-lockdown, and in the lockdown, we had no choice but to look for avenues online. My context is already that we are on Amazon. We did get listed very quickly. Our products were listed very quickly. Time and time again, some of my products, they just get deleted on its own. And when we try to reach out to the account manager, it takes so long. Sometimes it's for some of my products, it's still not happened. That was my one question, that how can I have somebody who can actually guide me through the process, and I'm looking forward to Saheli for that. The second question was that when I actually went through for a strategy with these Amazon experts who are there, in the industry, they would advise me that, Kajal, unless you have a fund that is there at least for a year or two with Amazon, where you have clear-cut marketing strategy and a reasonably sized fund in the amount of lakhs, don't venture into it. You have to try different channels and see what works for you. So I would like your insight on that. My company name is Plant Power. And like I said, it's a nutrition product business. Okay. So, yeah, I'll answer the second one first. See, any business will need investment. However, I obviously, I don't know the complete details of your business to advise you specifically, but selling online is definitely the more efficient and the less forward investment business. Okay. I actually, if you just what I heard, I would disagree on what I hear, but obviously there could be case details. Any selling on online at a certain cost is, and not Amazon, I'm saying any platform allows you that. So I'm not advocating Amazon, any online platform, that's the basic nature of it, that you can be start with a minimal investment. How much you want to scale is on you, and how much you invest accordingly. So that's how I'll answer the second piece. On the first one, what I understand that you're in the case in the business of nutrition. Now in nutrition, what happens, it is a very tightly guarded category from consumer lens. And if what I understood, that all the listings were there, but then maybe some of them got suppressed, jo hum kehte hain, dikhna band ho gaye, ya if they got removed. There could be many reasons for it. It could start from
from some legal documents that we would need to sell some of those categories. It could start from some of the feedbacks would have got on some category. It could start from some of these are restricted for certain sellers as per the government. So it could be any of these. Again, if you want, if I hear you have not got it cleared for you as yet, feel free to put in your case details and we will see which case is it for you. But yes, any edible item or any item which goes on body is a very tightly guarded category on quality, legality, certifications, and all that. So it could be any of those. Maybe once we have details, I can answer that. Thank you so much. I appreciate that. Yes, it is a unique company and a different case study. So who at Saheli can I reach out to for this particular case? Is there an email ID? Yeah. I think at the end of the session, Madhura, we are going to give a contact here. Okay. Yeah, otherwise, you can write to us, Kajal. We'll organize the connect. That's not a problem at all. Okay. We have time for one more question because we're already over time. I think I'm getting questions more on the existing businesses. If there are any new business question, I would like to answer that. Can I ask a question? Yes, please. I'm Sonali. Yes, Sonali. Okay, so I'm an artist. I'm an artist. And I just want to know, like, as an artist, how I can onboard. And secondly, I also want to put up my products, not like a ready product. To make an art, you need certain kind of a boards and canvas and a lot of things. These also, I just want to introduce under my brand. So is it possible? I have all the GST and all the details, what is required. Everything I have registered so many times on Amazon, but I am always scared of putting my products as of now. So and I'm not selling anything. Just want to know, do these two things are possible as an artist, my ready products, and what will be the response, like how I have to go about it? Because what I make is a custom product. Is there any possibility where customer can choose that what they want out of it, and then I can make and put it up? Or do I have to just show the exact product which is there and they can just buy that? And second thing, if I can put these boards and canvas and all the stuff which is required for the art. Yeah, so Sonali, is it right? Yeah. Art. Sonali, right? Yeah. So Sonali, is it right? Yeah. Okay, I could hear an echo. Yes, Sonali. Right? Yeah. So Sonali, is it right? Yeah. Yeah, it's some echo. There's some echo happening. I think. All is it right? Will help. There's some echo. There's some echo happening. I think. All is it will help. There's some echo. I think there's a little bit of a tech glitch over here, so we probably, I think there's a little bit of a tech glitch over here, so we probably, I think there's a little bit of a tech glitch over here, so we probably, should we try once? I think it is better now. Yeah, it's better. I typed in the answer to that. So just to quickly, yes, you can list your products, Sonali, but the custom requirement is we are piloting that with 1 or 2 categories. And not yet there for, I understand, it could be painting or home decor, not yet there. But we are piloting something. So as of now, the answer would be no. Yes. One question I'll just like to address, Madhura, because I saw it, which is typically the question that comes up, कि अगर मेरे पास GST नहीं है, तो can I sell on Amazon? Okay. Now, this is something where it's again a legal requirement, except few categories, जैसे books हो गई. There are some other categories where government doesn't need GST for you to sell. In those categories, you can sell. For all other categories, we would need a GST. And in case you do not have, if you go on Amazon, there is a
support where we have a certain tie-up with one of the companies where they can help you out get a GST. And there are many such vendors. You can choose any vendor. There are 1 or 2 enlisted on the Amazon site also. You can use them, or you can use anyone else. But yes, for most categories, GST is a prerequisite in India to sell. Is trademark also required? No, not necessary. If you have it, it helps your product sell better. If not, you can still sell. Hi, Swarnim. I have a quick question if I can go. Yeah, I think it's on Madhura on till when. Yes, please. But last question. This is the last question we are taking. I know there are lots of questions, but please note that we will keep coming back with Swarnim and his colleagues over here for all the questions. This is just the beginning of the partnership, and we are truly, humbled by the response that we are getting. But please go with the last question now. And we will then call this call this to an end. And then we will move forward, on email, and you can always reach us on Telegram and any other LinkedIn and any other forum. Fantastic. There was one person who said, "Can I go now?" Yeah. I'm just looking. Hi, I'm Navneet. I'm the founder of the Umbrella Store, and I've been selling on Amazon for about 4 years now. I've been a part of Saheli program for 2 years now. But lately, what I've experienced in the past 1 year is it's very difficult to get in touch with someone from the Saheli team. And I've written lots of emails, but I haven't received any response. So any better way to connect to the team, Swarnim? Just for my quick, where do you write mails? Like there's a Saheli support email ID. Yeah. Okay, if that is the case, I will figure it out while it's not addressed. But also to guide just a broader, and I'm linking it back to the forum and not making it an individual answer. See, for Amazon and most online places, the account management support, ya aapka business badhane ka support is limited to a certain period. Post that, it is expected that the seller or whoever the seller is takes it on his or her own to grow the business. If the seller still wants to grow take support, there are paid account management programs also. So where if you want, you can also apply for those. So what we are talking of free account management versus paid. So free will be limited to a certain period. But after that, you still would want a support. There are paid account management options available, which if you feel you can apply for and get that support as well. But in your case, just type in your I think email or contact or the mail ID or a case ID if you have, and we'll figure out why it is not answered. Okay, I'll do that. Thank you so much. One more question, please, if you allow. Okay, Nida. Last question. Okay. Yeah, actually, yes, thank you so much. I am a researcher. I've completed my PhD in bioengineering, and I'm into research. I basically work on organic sunscreens. So apart from that, I would like to know that if the EntrepreNaari team has any of this, they have their team in Lucknow. So I would really want to get associated with that team and, offer any help and in fact, learn from them. Is there any that kind of option available to get associated with the EntrepreNaari team, apart from starting a business and things like that? No, absolutely. So Nida, we at EntrepreNaari, it is a fantastic community that we have built, and today there are women from across the globe actually who are part of EntrepreNaari, and we do encourage women to work with each other, collaborate, and exactly what you're saying, to draw strength from each other. We also have learning programs from time to time. We have mentors. You can be a mentor. You can get mentorship. We ensure that there are enough and more inspirational stories like the one that we heard today from Ruma Devi. It is on our social media. Please follow us on social media. We have a separate Instagram handle of EntrepreNaari. We have a separate LinkedIn showcase page of EntrepreNaari as well. So please follow us, and anything that excites you, come and tell us. Preeti Menon at our end looks after EntrepreNaari. She leads EntrepreNaari for us. So I would like to know how to get associated with this team, which is doing such a noble work. Absolutely. Just write to us at preeti.menon@aspireforher.com,
or Madhura DGS@aspireforher.com. It's all our details are freely available. You can get in touch in any way. And we'd love to have you in EntrepreNaari to make this a bigger, better. I would like to represent the Lucknow team of EntrepreNaari. I hope if they're fantastic. We love that. We would love that. We would love that. You should set up a Lucknow chapter, and you should lead the Lucknow chapter for us. Okay. Yeah, that's what I want, and I'm willing to. Yes. Thank you, Dr. Nida. I have dropped my email ID in the chat box as well. For ease of copying, you could take it up from there. Thank you so much. Thank you. Fantastic. I think the questions before we will do the thank yous, before we do the thank yous, I'll just need to circle back on the important details of the application process and the date. Yes, Preeti. Let's do that. Let's do that. Why don't you do that? Yeah. I will take a second and to do that. Just give me a second. So the links has been dropped in the chat box a couple of times. In case somebody doesn't have it, please do let me know. We do have the same banner right now live on our website, which is www.aspireforher.com. The banner is live. You can apply via that. In case you want to do the application process later, please bookmark and save the page so that you can come back to it easily. The whole month of May till 31st May is when we are accepting applications. June being MSME month, we couldn't have a better date to start off the cohort. So just give us a week. Normally our applications tend to get overwhelming, which is a good problem. So we will need about a week to sort out those applications and come back to you with the final selection of the cohort by the first weekend of June. Any questions regarding the application process, or in case you're figuring out any troubles there, my email ID is dropped into the chat box, but I will repeat it again. It's priti.menon@aspireforher.com. Any questions regarding the application process? I can maybe take a couple of questions, but regarding the eligibility of application is not something which we will handle right now, but you can definitely write to me one-on-one and we can answer that. Fantastic. I think we should say a warm round of thank yous to everyone. Thank you very much, the entire community, for being here. Please keep the questions coming. You have all our coordinates. There is a fantastic EntrepreNaari Telegram group where you can also type in your questions and we will try our best to answer them as fast as possible. So Preeti, over to you to close the session. And a warm thank you to Ruma Devi ji for making her presence felt, for inspiring all of us today. Thank you to all our friends at Amazon. Swarnim, thank you very much. Pooja, Deepika, and everyone else in the Amazon team, thank you very much for making this day possible for us and opening up such a wonderful world to our EntrepreNaaris. So Preeti, over to you. Absolutely. No, thank you so much, Madhura, for putting this together to start this initiative. And thank you so much to Swarnim, and not any less to Pooja, who have been a constant support during all this to put it all together. Thank you, Ruma ji, आपके time के लिए. उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग सकते थे आज के लिए. Thank you so much for coming on board. Thank you, Anuradha, for putting it up all together. Thank you each and every one of you who turned up, and the rest of you who are messaging on groups or maybe on YouTube's. We'll be more than happy to attend to anything and everything which you need during this cohort. Please feel free to reach out once you are part of the Telegram group, which will be in the auto response after the application. We'll be more than excited to see you all there. And thank you so much for everybody for sparing your time on a Friday afternoon.